Okay friends, so second in the series of these videos, some of the features of an ERP system. The first most important feature of an integrated software environment like an ERP system is that some of the things are automated. There is relatively less human intervention. For example, if we have set an inventory level of say 400 units in our stores, that whenever the stock falls to 400 units we make an order, and this usually is noticed by the stores manager or the store supervisor. So store supervisor take note of the stock shortage and he initiate the purchasing process. He raised a purchase requisition to the purchasing manager asking him to initiate the purchasing process because the stock has fallen to 400 units. Now, if there is an integrated enterprise system which is being used by the purchases and the stores and the accounts and finance and everybody in the organization, then what can happen is that we can program in the ERP that whenever the stock actually falls to 400 levels, there is an automatic initiation of, or say automatic email to purchase department, or automatic initiation of purchase requisition to purchase department, that there is some need of purchasing of those goods. So no human intervention is required. Nobody is required to note the shortage because the inventory is updated in the system automatically whenever the new receipts are there, whenever the new issues are there, and the system automatically creates the purchase requisition. So similarly, these some of the things can be automated. The second important feature of an ERP system is integration. Of course, the very definition of ERP says that the things are integrated. Sales and production are integrated. So when a customer calls to the salespeople that he needs a stock and the order is of abnormal size, we usually deliver say in dozens, but the order is in hundreds of dozens. Then if there is no centralized system, then the marketing people once need to confirm from the warehouse whether they have the stock or not. The warehouse people then have to confirm from the production whether the production people are making the stock or not, and the production people has to confirm from the purchases whether the purchases is buying raw materials for them or not. But if the entire system is integrated, if there is an ERP environment, the marketing people, the sales people at the time of recording the order can see on their screen how much stock is there in the warehouse, how much stock is going to be produced by next week or next month from the production department, how much is going to be procured, how much raw materials are going to be procured by the purchasing department. So all the information is since integrated, so it's on the screen of every required person. A third important benefit of an enterprise resource planning system is business process optimization, because the ERPs like SAP, like Oracle, they claim, and their claims are right, that they have implemented their applications in the multinational corporations in the world. So they have learned from their experience. They have updated their applications with the experience they have got from the major big companies in the world. So whatever their applications deliver, for example, the purchasing process embedded in SAP ERP system is one that's being used by the best companies in the industry. This means that whenever you purchase an ERP system from SAP or say from Oracle, they actually automatically give you those systems, those process flows which are implemented by the major players in the industry. So you don't buy only a software, you don't buy only an application, but an ERP nowadays is automatically delivering you the best practices of the industry. So if you do your purchase process, for example, in 7 steps, but the industry, the good players in the industry do complete purchase step in purchase process in the 4 steps, then whenever you purchase an ERP, you have to do your business process optimization. You have to convert your purchase process to 4 steps, which is being done by the major players in the industry, which simplifies the process, which reduce your cost, which increase your efficiency. Another benefit of an enterprise resource planning is standardization. And let me share with you an example which will make it clear. When I joined IBA, there was no ERP system there, and there were different systems, different software operated by every department. So I had an ID card issued by admin department. It had an employee number. I had a library account, and they have an HR number for me. And I had a record in my CMS, campus management system, and they had a personal number, for example.
So I have three sets of data. One with the admin department, they have name Muhammad Asif. One with the library, they have name Muhammad Asif Jafar, and their number is called HR number. The admin number is number with the admin is called employee number, and the two numbers were different. One was 561, for example. The other one was 49. And the third data is with the CMS, which has not number but is user ID, which was MASIF, and it has my name, Muhammad, Dr. Muhammad Asif Jafar, for example. So it means that whenever I am going to be referred by a library people, it will be a different terminology. It is HR number. When I am going to be referred by an admin people, they use the term employee number, not the HR number. HR number doesn't have any sense to them because all of them have different applications. So they have their different their own standards. But when it comes to an ERP system, when you use the same application across all the functions in the industry, in the company, then the terms are standardized. There's only one name for every single attribute which is used across all the organizations, right? So that's how the things are standardized. The terminology is standardized, and when one people speak about any information or data in the system, the other people can understand what they are actually talking about. Similarly, the processes are standardized. For example, if I have three different products and I am selling three different products by three different departments, if the systems are separate, then each department will have a different sales process, a different recording process, different documents name. For example, one department might call it a sales order, the other one might call it a purchase order, because a sales order for the selling organization is a purchase order for the purchasing organization. So they might refer the same document with another term, but when the same system is working across every function in the organization, the terminology is standardized. Another important feature is the real-time processing, that as soon as we enter the data, everything is updated in the system. We can get our income statement, we can get our balance sheet from the very accounting perspective as soon as we enter the data in the system. So there is no process of closing, there is no separate process of posting, but everything is available instantaneously in the system. And you can imagine the importance of real-time processing specifically for banking industry, specifically for stock exchange, because for the stock exchange and for the banking industry, the real-time information is very important. Delay of few seconds can actually result in huge risk and losses. Another important thing, flexible and scalable. It means that I have started with 10 employees, and 2 years down the road, I have 1,000 employees. And ERP is something which is scalable and flexible. I don't need a new system. If I'm working right from the very start on an ERP, if I make two campuses, three campuses, I make three companies, four companies, my same system will suffice my requirements because it is flexible, because it is scalable. I can open new companies in it, I can make new accounts in it, I can extend everything in the system. That's the scalability and the flexibility. So these are some of the benefits. Let's see some of the downsides. Just imagine what could be the downsides. Guess downsides. You should not move forward. You should stop this video here and have some downsides listed on the piece of paper from your own knowledge, from your own guesswork, and then you should continue this video. So, okay, what are the downsides? The first one is the complexity. Since things are integrated, things are very complex. I give one very simple example to understand this feature of complexity from in an ERP system, and that example best suits the Pakistani environment, since there are some students who are actually not in Pakistan. So this is a sort of a Pakistani environment. So in Pakistan, for example, we have now superstores, departmental stores, and we have some grocery shops as well in every street. So let me continue to Urdu just to make it a more flavor, Pakistani flavor. कि अगर मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ कुकिंग ऑयल चाहिए और मुझे जनाब सिर्फ फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं घर के करीब ग्रोसरी शॉप से जाके दो चीज़ें ले लूँ, वो भी 1 किलोमीटर के फासले पे है मेरे घर से, और दूसरा ये है कि मैं अपने घर से एक सुपर स्टोर पे जाऊँ और सुपर स्टोर से जाके ये दो चीज़ें ले लूँ और वो भी 1 किलोमीटर के फासले पे है। What do you think? What is the best option? Number one, for this particular requirement, number one. And my second question is, which of the two options is more sophisticated, is more economical, is more technologically advanced option? So if we answer the question number two, of course, we know that a super house is more economical, things are more cheap.
A superstore is more economical. A superstore is more technologically advanced. There are point of sale systems installed there, and everything is well organized into racks. But it's complex as well. If I just need two items, it's more convenient for me to go to the grocery shop and buy them rather than go to the superstore, because in the superstore, since everything is organized, so for the two items I have to travel across many parts of the superstore in order to know where the items are placed and then depict two items. So the same case is with an ERP. ERP has many features. It's not suited for a small or medium sized enterprise when it comes to Pakistan, for example. It is suited for a big company, a big organization, because the things are very complex. The things are integrated, the things are very complex. One example of a complexity in SAP, I just wanted to share with you, is that imagine an accounting entry. हम अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं। अकाउंटिंग एंट्री में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि अकाउंटिंग एंट्री प्रैक्टिकली जब इंडस्ट्री में बनती है तो उस पीस ऑफ पेपर पे जो वॉचर होता है जिस पे अकाउंटिंग एंट्री बनती है उस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आप इमेजिन करें और काउंट करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है हम 10 या 12 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन पे रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसमें डेट होती है, उसमें जो है वो डेबिट का अकाउंट नंबर होता है, उसमें क्रेडिट का अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नेम्स होते हैं, अमाउंट्स होती हैं, और कम से कम 2 अकाउंट होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नरेशन होती है, अगर किसी को पेमेंट हुई है, कैश वाउचर है, बैंक वाउचर है, तो चेक नंबर होगा, किसको पेमेंट हुई है उसका नाम होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप मिला लें तो मैक्सिमम 10, 12, 15 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनेंगे जो एक वाउचर के अंदर होने चाहिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज की डिफरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। The point is, when you make a journal entry in an SAP ERP system, financials in an SAP ERP system, on the screen, do you know how many data fields we see on the screen? More than 100 data fields. जब आप एक अकाउंटिंग एंट्री के लिए स्क्रीन ओपन करते हैं तो आपके सामने 100 से ऊपर डेटा की फील्ड्स होती हैं। Why this is so? This is the complexity aspect which we are talking about, because this is not meant only for a very small company की जिसकी डेबिट क्रेडिट अकाउंट टाइटल अकाउंट नंबर बस और कुछ नहीं है, बल्कि ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर जो है बहुत सारी और सोफिस्टिकेशंस हो, उनकी नीड्स को कैटर करता है। तो उसमें उनकी तमाम फीचर्स मौजूद हैं, और दो उन फीचर्स को डिसेबल किया जा सकता है, उन फीचर्स को स्क्रीन से हटाया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज स्क्रीन्स हैं वो ये सारी चीज़ें के साथ लिए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसएपी स्पेशली, ये वैसे तो कॉम्प्लेक्सिटी का एलिमेंट हम अभी एसएपी को डिस्कस नहीं कर रहे, ईआरपी को डिस्कस कर रहे हैं। ये एलिमेंट हर एप्लीकेशन के साथ है, लेकिन एसएपी के साथ ये ज़्यादा है। एसएपी राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इज़ नॉट अ यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन, बल्कि अगर यूज़र फ्रेंडली के बजाय कोई और टर्म होती ना कि यूज़र एनिमली एप्लीकेशन या एनिमिटी और समथिंग लाइक दिस, मुझे नहीं पता क्या इसकी इंग्लिश में टर्म बनेगी, तो हमें कहना चाहिए कि एसएपी एक यूज़र दुश्मन सॉफ्टवेयर के तौर पे मार्केट में आया है। ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ मार्केट में आया है, यानी जब फर्स्ट टाइम ये आया था, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रियलाइज़ किया है और इन्होंने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। आज जिस एसएपी के वर्जन पे हम काम करेंगे आज मीन्स के इस कोर्स में, वो उस वर्जन के मुकाबले में जिस पे एसएपी पे मैंने सर्टिफिकेशन की है उसके मुकाबले में बहुत यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन अब भी ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, अब भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी वाले एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। इसीलिए एसएपी सिस्टम को लर्न करना, एसएपी एप्लीकेशन को लर्न करना, एसएपी के अपने लिटरेचर से पढ़ के बड़ा मुश्किल है। अगर आप एसएपी के लिटरेचर को पढ़ें तो एक तो ये कि वो मेरे ख़्याल में कोई बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ, कोई ऑर्गेनाइज वे में डेवलप नहीं हुआ, उस तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह के अमेरिकन बुक्स अगर आप पढ़ते हैं कोई सिलेबस की, मैं अमेरिकन बुक्स कह रहा हूँ, ब्रिटिश बुक्स नहीं कह रहा, बिकॉज अकाउंटिंग की मैंने फ्रैंकवुड भी पढ़ी है, ब्रिटिश बुक्स भी पढ़ी हैं, अकाउंटिंग की मैंने अमेरिकन बुक्स भी पढ़ी हैं। अमेरिकन बुक्स आप पढ़ते हैं वो आपको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, वो चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाते, चीज़ों को रिलेटिवली आसान बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये नॉर्मली एसएपी में नहीं पाई जाती, ऑल्दो दे आर दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, but they are far away from it, in my personal opinion. So this is my personal opinion. Of course you can have your own जब आप SAP से go through करेंगे। Second important downside is the cost. I don't exactly know the cost for S4HANA right now, but approximately it is on the standard, इनकी जो price है वो $1000 per user जो है वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, इसमें आपके सर्वर शामिल नहीं है, इसमें ट्रेनिंग शामिल नहीं है, इसमें कंसल्टेंट जो आके इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी रिम्यूनरेशन, उनके जो पैसे होंगे कंसल्टेंसी चार्जेस वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ लाइसेंस फी है और इसका ऑलमोस्ट 25% जो है ये आपको जो है
ये एनुअली देना पड़ता है। $1000 पर यूज़र। इमेजिन एक बड़ी कंपनी के अंदर कितने यूज़र्स होंगे। हम IBM में इस वक्त पीपलसॉफ्ट का ERP यूज़ कर रहे हैं, SAP यूज़ नहीं कर रहे, और हमारे पास 3000 तो कोई स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट एक यूज़र है। हमारे पास 200 फैकल्टी मेंबर हैं, हर फैकल्टी मेंबर एक यूज़र है। हमारे पास 500 के करीब स्टाफ है, उसमें से 400 का स्टाफ ऐसा है जो नॉन क्लरिकल स्टाफ है और वो सारे के सारे ERP यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसको $1000 से मल्टीप्लाई करें, ऑल्दो दे ऑफर SAP पीपल दे ऑफर डिस्काउंट्स एज वेल। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में बाज़ दफ़ा 70-80% डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं, लेकिन फिर भी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। फाइनली इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ी थी पिछली स्लाइड में, जिसको एज अ फीचर पढ़ा था, एट टाइम्स ये आपके एक डाउन साइड भी बन जाता है। ठीक है, और इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर शादी हो मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी तो अगर शादी के बाद बनते हैं, तो अगर एक मर्द और एक औरत में शादी होती है, तो अगर इस शादी को सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल के 4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि ए चेंजेस अकॉर्डिंग टू बीज एक्सपेक्टेशन, कि हुआ ये कि लड़की ने अपने आप को लड़के के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को मोल्ड कर लिया, जैसे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन माशरे में होता था आज से 10-20 साल पहले तक। दूसरा ऑप्शन ये है कि बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज एक्सपेक्टेशन, कि लड़का अपने आप को लड़की के हिसाब से चेंज कर ले, जैसा कि शायद आजकल हमारे माशरे में होता है। ठीक है, अगेन ये सिर्फ मजाक है, इसको पर्सनली नहीं लेना किसी को। तीसरा ऑप्शन ये है फिर भी सर्वाइवल हो जाएगा, लड़की चेंज कर ले फिर भी सर्वाइवल हो जाएगा, जोड़ा चल जाएगा आगे, लड़का जो है वो अपने आप को मोल्ड कर ले फिर भी जोड़ा चल जाएगा आगे। दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, 50-50% अपनी आदतों को छोड़ दें और 50-50% दूसरे की आदतों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लें, फिर भी जोड़ा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी चेंज ना हो, अगर लड़का अपने स्टैंड से ना हटे, लड़की अपने स्टैंड से ना हटे, तो फिर सर्वाइवल नहीं होगा। इसको मैं फिर अपनी ऑन कैंपस क्लास में मैं इसको अज़राए तफरी में कहता हूँ कि फिर इमरान खान रेहाम खान वाला केस हो जाएगा। तो एक्चुअली when you buy an ERP system like SAP, it's just like it's not less than a marriage for an organization. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी शादी से कम अलमिया नहीं है, या किसी शादी से कम शादमानी का लम्हा नहीं है। या तो ऑर्गेनाइजेशन को 4 चाँद लग जाएँगे, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो काम कर रही है उससे भी पीछे चली जाएगी। कॉस्ट तो अपनी जगह है, उसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। दैट्स व्हाई कि देयर आर सिस्टम फेलियर्स केस स्टडीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में दीवान ग्रुप ने इम्प्लीमेंट किया था, 1 साल 2 साल चला के, फॉर सम रीज़न और अनदर दे हैव टू रोल बैक, इनको पुराने सिस्टम में वापस आना पड़ा। तो एक्चुअली ये जब सिस्टम आते हैं तो ये सिस्टम कहते हैं कि जी आपको हमारे हिसाब से चेंज होना है। यानी ये दुल्हन है अगर, तो ये दुल्हन कहती है कि जी देखें जी, आप ये ना सोचें कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को चेंज कर देंगे आपके हिसाब से। सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस, इस किस्म की जो ग्लोबल एप्लीकेशंस हैं, इनके अंदर चेंजेस आर नीदर रिकमेंडेड बाय द SAP themselves, the companies themselves, nor are undertaken by the consultants, the people who customize. आप अगर कहेंगे ना कि इस सॉफ्टवेयर को हमारे लिए बिल्कुल ऐसा बना दें, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, वो तो हर कंपनी अपने हिसाब से उसको मोल्ड करती है, लेकिन आप उसकी अगर बेसिक फाउंडेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में नहीं होती। अगर आप कहेंगे कि नहीं आप इसको चेंज करके बना दें, तो कंसल्टेंट आपको बना तो देंगे, लेकिन कंसल्टेंट आपसे कहेंगे कि जी इसके बाद कोई मेल फंक्शनिंग हो किसी प्रोसेस में, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगला वर्जन आएगा, अगले वर्जन में आपको दोबारा कस्टमाइजिंग करानी पड़ेगी, उसके अलग से पैसे चार्ज करेंगे वो आपसे। तो इसलिए जो है, जो इस किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो कहती हैं कि जी आप अपने आप को चेंज कर लें, रादर देन ये कि आप हमसे कहें कि हम चेंज हो, हम दुनिया से सीख के आ रहे हैं, हमने दुनिया में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किए हैं, एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, हमें पता है अकाउंटिंग कैसे होती है, हमें पता है परचेजिंग कैसे होती है, हमें पता है सेल्स की प्रोसेस को जो है वो कैसे कैटर करना है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने दुनिया की हर इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशन डिलीवर किए हैं। हमने ऑयल एंड गैस के लिए सॉल्यूशन डिलीवर किए हैं, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशन डिलीवर किए हैं। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, तो आपको सेल्स कैसे करना है, ये आप हमें ना बताएं, हम आपको बताएंगे। तो दैट्स द थिंग कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है कि अगर हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं हैं, चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी नए ERP इम्प्लीमेंट करते वक्त। हम अगर इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो ये सिस्टम फेलियर भी हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द डाउन साइड्स। ऑल्दो ये हमारे कोर्स का मेन उन्वान नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जहन में रहना चाहिए, ताकि हम जब आगे SAP पे काम करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में। सम कॉम्पिटिटर्स ऑफ SAP, ठीक है, गूगल भी कीजिएगा, ऑफ कोर्स ओरेकल है, जेरी एडवर्ड्स ओरेकल ही का पुराना सॉफ्टवेयर था। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इस वक्त जो है, माइक्रोसॉफ्ट का भी जो है वो पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज में चल रहा है।
SAP, रिमेंबर कि हम जब कह रहे हैं कि SAP के कॉम्पिटिटर्स, तो हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि SAP भी एक कंपनी है। SAP की एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एप्लीकेशन नहीं है, SAP की बहुत सारी एप्लीकेशन है, SAP के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम अगली स्लाइड्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। जनाब, समथिंग अबाउट दी SAP। 1972 में कंपनी फाउंड हुई थी। IBM के 4 इंजीनियर्स थे, उनका एक बिजनेस आइडिया था, उन्होंने शेयर किया टॉप मैनेजमेंट से। टॉप मैनेजमेंट ने उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन किया, अपनी कंपनी बनाई, अपने आइडिया पे काम किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एप्लीकेशन बनाई MRP 1 के नाम से। वो एप्लीकेशन मार्केट में काफ़ी इन हुई, मार्केट में काफ़ी एक्सेप्ट की गई। इन्होंने एक सेकंड एप्लीकेशन बनाई MRP 2 के नाम से, वो भी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके बाद इन्होंने SAP का फर्स्ट वर्जन बनाया SAP, और उसके बाद SAP R2 R3, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि ये SAP इतनी बड़ी कंपनी बन गई उन 4 इंजीनियर्स की वजह से। उनमें से एक गालिबन आज भी हैसोप्लाटन इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, कि जो है ये कंपनी, ये जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने IBM से रिज़ाइन करके ये कंपनी बनाई थी, IBM इनका पार्टनर बन गया। IBM इनका जो है वो पार्टनर बन गया, इनका एजुकेशन पार्टनर बन गया, इनका बिजनेस पार्टनर बन गया। यानी SAP grew bigger than IBM. So it's the world's largest business software company independently, and over 65,000 employees in more than 75 countries, 400,000 satisfied customers across the world in more than 190 countries, and 2,500 business partners. Business partner means those who are officially given license to either deliver SAP education or deliver SAP implementation or sell SAP products. What are some of the strengths? Although ये strengths अब claim नहीं करते, अब वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। SAP काफ़ी innovative कंपनी है। इन्होंने अपने आप को जो है वो एक अच्छी मार्केट शेयर कैप्चर करने के बाद स्टॉप नहीं किया, बल्कि चेंजेस के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से इन्होंने मार्केट को लीड किया है, और ये अपनी किसी एप्लीकेशन पे स्टैंड नहीं कर रहे, बल्कि हमेशा नई से नई एप्लीकेशन जो है वो लाते रहे हैं। जो फीचर्स वो क्लेम करते थे SAP के बारे में शुरू में, वो ये था कि मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। ऑल्दो अब ये चीज़ें बहुत सारी दूसरी ERPs भी जो है वो ऑफर करती हैं। इट मीन्स कि आप चाहें कि आपको इंटरफेस अरबिक में नज़र आए तो अरबिक में होगा, आपको चाहें कि आपको इंटरफेस फ्रेंच में नज़र आए तो फ्रेंच में नज़र आएगा। इफ़ यू वांट इट टू सी इन इंग्लिश, which is the default language, then you can see it in English, in French, so in many languages of the world. It's a multi-currency. It means that purely from accounting point of view, we can debit and credit in different currencies. We don't need to convert at the time of passing an entry into our local currency. So for example, if we are dealing in dollars, then the entry will be made in dollars. Although the conversion has to be done in order to come up with the reports, income statement, balance sheet, but that conversion will be done separately. The original entry will stay in dollars, and you can see the entry either in dollars or in converted Pak rupee as well. Whereas the legacy systems, the normal system, what they do, you have to convert first the foreign currency into Pak rupees, for example, and then, or any local currency, dirham, and then you have to pass the entry. But this is no longer the case with SAP systems. Multi-balance parallel GL accounting. Since most of us are accounting students, so we all can realize that sometimes, because of the consolidation, because of the multiple reporting requirement, we have a head office in Europe, for example, we have one of the subsidiary, one of the branch in Pakistan, another branch in India, then we have to report to 3 regulatory environments, and they all have different accounting treatments for example, one and the same expense. So this multi-ledger accounting is also supported in SAP system. Another important feature is that they have delivered specifically customized industry applications for different industries. Almost, I remember, I don't exactly remember, but I think there are 22 different industries for which they deliver industry specific versions of their software, their applications, right? Acha, by the way, whatever application or software we are talking about right now for SAP is SAP ERP. SAP के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम, लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो SAP ERP है, जो SAP ही का एक सॉफ्टवेयर है, जो उनकी ERP का सॉफ्टवेयर है। और वो इस वक्त जो है, प्रीवियसली वो SAP ERP ECC 6 के नाम से था, उसका जो वर्जन था। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो SAP ERP विद इन SAP सूट फॉर हाना, S4 हाना के अंदर वो चल रहा है। तो उसकी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, ऑल्दो हम तो उसकी जेनरिक वर्जन पे काम कर रहे हैं, और जेनरिक वर्जन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्जन में फ़र्क ये है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्जन में 10% एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो उस इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अपना वर्जन है, यूटिलिटीज़ कंपनी के लिए अपना वर्जन है, बैंकिंग कंपनीज की अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसमें 10% एडिशन करके जेनरिक वर्जन में उसका अपना वर्जन है। हायर एजुकेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो उसका अपना वर्जन है। तो ये इन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्जन में डिलीवर किए। इट मीन्स कि अगर हबीब बैंक जो है वो SAP लेता है,
तो उसको एसएपी के जो वर्जन डिलीवर किया जाएगा वो वर्जन नहीं होगा जो पार्क सुजुकी मोटर्स को डिलीवर किया जाएगा। ऑल्दो 80% 90% जो है चीज़ें सेम होंगी, लेकिन 10% 20% चीज़ें इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें उसमें कस्टमाइज की हुई होंगी। एसएपी प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो आई वांट कि आप ब्राउज करें, एक्सप्लोर करें कि एसएपी की कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच यू शुड नो आर सीआरएम, एसएपी अरीबा, एसएपी सक्सेसफैक्टर्स। आपको पता होना चाहिए किस-किस पर्पस के लिए हैं। एसएपी ईआरपी, ये रेड वाला वो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो अब वो ईआरपी के नाम से नहीं जाना जाता, एस4 हाना के अम्ब्रेला के अंदर आता है वो, बट स्टिल एसएपी ईआरपी। एसआरएम, सीआरएम, सीआरएम ऊपर भी लिख चुके हैं, डुप्लीकेशन हो गई है। एससीएम, पीएलएम, सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। एसएपी बी1 भी एक एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल इम्तियाज सुपर स्टोर में यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट बिरयानी में यूज़ हो रहा है एसएपी का, जो रिलेटिवली छोटा सॉफ्टवेयर है। ये एसएपी की जर्मनी है, जब से इन्होंने शुरू किया 1979 में। इनका जो एसएपी का फर्स्ट वर्जन था वो R2 कहलाया। देन इन 1992 द नेक्स्ट वर्जन वाज R3। देन ईसीसी इंटरप्राइज कोर कंपोनेंट ईआरपी 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ, और 2015 से ये एस4 हाना के वर्जन पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। Some of the applications in SAP ERP. So remember now, SAP is an umbrella. SAP जो है वो umbrella है, वो कंपनी है। SAP की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक एप्लीकेशन जो है वो SAP ERP है। सो SAP, ये आई एम सॉरी मेरे पास पेन नहीं है कि जिससे मैं सही से लिखूँ, ये मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये शायद बहुत ज़्यादा क्लियर तो ना हो। तो ERP एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर फर्दर 3 एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन, वो 3 एप्लीकेशन हम आगे देखने जा रहे हैं कौन-कौन सी हैं। वो एक एप्लीकेशन जो है वो लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर सप्लाई चेन रिलेटेड सारे मॉड्यूल शामिल हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल एसडी कहलाता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल एमएम कहलाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल पीपी कहलाता है, प्लांट मेंटेनेंस पीएम कहलाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएम कहलाता है। ऑल्दो ये नाम पुराने हैं, नए वर्जन में इन्होंने कुछ नाम चेंज किए हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इस वक्त मार्केट के अंदर यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। फाइनेंस के अंदर हमारे पास फाइनेंस दूसरी एप्लीकेशन है, जैसे हमने कहा 3 एप्लीकेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस एंड एचसीएम, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ये 3 एप्लीकेशन है। फाइनेंस के अपने सब मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, एसेट मैनेजमेंट, ट्रेजरी, और इसके अलावा एचसीएम के अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं। और इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा और इसके यूज़र इंटरफेसेस पे हम इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो पे बात करते हैं। थैंक यू।